Bonjour, ça va? आज हमारा लेसन है लेसन 39B। इसमें हम डेल्फ ए1 का सेकंड लेटर टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। हमारा सुजेट दो जो है वो तो वकांस आला कंपान से स्टार्ट होता है। हाउ टू राइट अ गुड लेटर, ये जो टिप्स हैं इसको नोट कर लें, स्मॉल टिप्स हैं। राइट साइड पे डेट लिखनी है, आपने इनफॉर्मल्स और फॉर्मल कोर्स का ख्याल रखना है, कौन कौन से वर्ड यूज़ करने हैं दोस्तों के लिए और कौन से यूज़ करने हैं आपने फॉर्मल लेटर के लिए, एक्सप्रेशन यूज़ करने हैं आपने, और लेटर की जो लेंथ है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 50 या 60 वर्ड जो उन्होंने कहे हैं उसके 5-10 मैक्सिमम 10 कम या 5 या 10 इसके दौरान कर सकते हैं। तो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है Vous êtes en vacances à la campagne avec vos amis. Vous êtes en vacances, you are on vacation à la campagne in the countryside avec vos amis, with your friends. Vous écrivez à votre amie française या français, अगर आप वो जो ब्रैकेट में उसको यूज करें तो फिर votre amie française pour expliquer quelles sont vos activités, le temps qu'il fait et vous demander ses nouvelles. Vous écrivez, you write to your friend française, French दोस्त जो फीमेल है, pour expliquer quelles sont vos activités, to explain her what are your activities, le temps qu'il fait, what time is there, how is weather there, like this. ये वो demander ses nouvelles और आप उसके हाल चाल पूछते हैं, you ask about her, how she is या how he is, as per person you are talking. Arlon, 27 octobre. Chère Pauline. Now we are writing to a female, that's why Chère Pauline. Comment vas-tu? Comment vas-tu? How are you? Je t'écris d'Arlon. I'm writing you from Arlon, où je passe de bonnes vacances avec mes amis Paul et Claudia. Je passe de bonnes vacances. I'm spending my best vacations avec mes amis, with my friends Paul and Claudia. Il fait beau et chaud. Il fait beau et chaud. Weather is very good and it's a little bit hot. Nous visitons les beaux villages. Nous visitons les beaux villages. हम beautiful villages यहाँ visit करते हैं. We go to visit beautiful villages. Nous faisons des balades. Nous faisons des balades. We go to walk. या हम घूमने जाते हैं, पैदल चलने जाते हैं. Nous faisons des balades. Et nous dégustons les spécialités de la région. Et nous dégustons les spécialités de la région and we taste local specialties. और हम जो local specialties या खाने हैं उनको खाते हैं, जाके चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं उनका. C'est génial. ये एक्सप्रेशन डाल दिया. C'est génial. That's very great. बहुत अच्छा है. Et toi, comment vas-tu? हमने ये रिपीट कर दिया क्योंकि उसने कहा था हाल चाल पूछना है. कोई बात नहीं, 2 दफ़ा हो गया, लेकिन कोशिश करें कि 1 दफ़ा भी लिख सकते हैं. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? What are you doing? What are you doing? Or what are you doing these days भी हो सकता है. À bientôt, see you soon. Groupies, Chris. Vous êtes en vacances à la campagne avec vos amis. Vous écrivez à votre ami français ou française pour expliquer quelles sont vos activités, le temps qu'il fait et vous lui demandez ses nouvelles. Parlons le 27 octobre. Chère Pauline. Chère Pauline. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Je t'écris d'Arlon où je passe de bonnes vacances avec mes amis Paul et Claudia.
Il fait beau et chaud. Nous visitons les beaux villages. Nous faisons des balades et nous dégustons les spécialités de la région. C'est génial. Et toi, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? À bientôt. हॉबीज क्विज सी आपने इसके 2 से 3 पैराग्राफ बना लिए, एक्सप्रेशंस डाल दिए, कोड का ख्याल रखा है. दिस विल बी अ परफेक्ट लेटर एंड उस टॉपिक्स पे बात कर ली जो टॉपिक्स आपसे एग्जामिनर ने कहे हैं कि ये पे आपने लिखना है आपको. थैंक यू फॉर वॉचिंग.